This is the fourth webinar we are doing in this crisis. The earlier ones was covering global markets. We spoke with a few doctors yesterday. And I thought the biggest issue which is coming because of this crisis is the legal, all the legal issues which are arising from it. So for that, I reached out to you. For those who don't know Taimur, I'm sure all of you, we have 28 people who have dialed in so far. Most of you will know Taimur. He's a partner at Clyde & Co, where he leads the effort on Pakistan and he covers Middle East and North America. He also is the founder of Qanun Daan and Quoting the Law in Pakistan, which are initiatives which he has led and developed to promote the legal practice and bring law to common people in Pakistan. At Clyde & Co, he advises global governments, Fortune 500 companies on issues ranging from corporate finance to international arbitration. So Taimur, you are the best person to talk to at this moment because you're in the heat, you're in the eye of the storm. You're dealing all the issues you deal with, ranging from international arbitration to corporate finance, are quite active right now. So, would love to get your opinion on what's happening in the legal, from a legal perspective in the world, and if you can shed some light on how does that impact Pakistan in particular. The format of this call is that we have 40 minutes. Would love to first hear your views for the first 15 minutes, and then we'll open it up for Q&A. So over to you, Taimur. Thank you, Ali. Appreciate the invitation to speak to you and other friends and colleagues who've joined the call. I think the important thing to consider is that Pakistan is not alone in relation to the legal issues that are arising from the COVID-19 situation. The entire world is in this boat. The unimaginable is happening in New York. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि even Middle Eastern economies जो हैं वो ना सिर्फ COVID-19 की वजह से impact हो रही हैं बल्कि oil price uncertainty and fluctuations की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी issues हैं. So I think in relation to Pakistan, we do need to appreciate that we are still much more resilient and lucky at the moment. Jahan tak speed of impact ki baat hai, I've been having these calls with the big four firms, with international advisors on a regular, almost daily basis. So just impact की जो speed है पूरी दुनिया में businesses के ऊपर, ये इसकी मिसाल पिछले I think पूरी century में नहीं मिलती है. And also because it's a global issue, it's not limited to one region or one territory. पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात करेंगे, I think हमारी resilience इसलिए भी है because हमारे family structures हैं. हमारी एक substantial population एक village environment और structure में रह रही है. उसके साथ साथ हमारे जो charitable nature है, I think that's coming to the forefront again as a saving grace for Pakistan. Having said that, हमें issues नज़र आने शुरू हो रहे हैं मज़ीद. अभी मुझे किसी ने भेजा है कि जी एयरब्लू ने अनाउंस किया है कि उनकी फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो अब एंड ऑफ जून तक सस्पेंडेड रहेंगे. सो हम पहले ये जनरली बात कर रहे थे इवन ग्लोबली एंड रीजनली कि अप्रैल और मई तो शायद राइट ऑफ हैं, लेकिन जून से चीज़ें इम्प्रूव करनी शुरू कर देंगे. बट आज हम 10 अप्रैल को ये देख रहे हैं कि बिजनेसेस स्पेशली इन द मोस्ट एडवर्सली इम्पैक्टेड इंडस्ट्रीज have already started taking decisions beyond June. So I guess we have to be ready for a more medium-term impact now, and not just look towards the next few weeks or few months. जो legal issues हैं, again, they're not just limited to Pakistan. पाकिस्तान ने कुछ provincial level वगैरह के ऊपर कोई pandemic को deal करने के लिए, epidemic को deal करने के लिए कुछ legal measures लिए हैं. बट अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज ने या इवन कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एंड आल्सो इमरजेंसी मेजर्स रिलेटेड प्रोविजंस लेके आए हैं टू सपोर्ट बिजनेसेस, देयर पॉपुलेशंस, देयर इंडस्ट्रीज एंड आल्सो द गवर्नमेंट्स इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस. एक चीज मैं और बात करना चाहूँगा बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑन सम की लीगल प्रोविजंस दैट आर ऑफ रेलेवेंस टू दिस क्राइसिस. कि देखें आप में से ज़्यादातर जो इस वक्त इस कॉल पे होंगे, आई एम अज्यूमिंग के बिजनेस ओनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या एडवाइजर्स हैं टू दीज बिजनेसेस.
please keep in mind that while it may be legally correct to take certain actions in relation to your contracts, as well as your employees, as well as in relation to the government and your service providers, I think we all need to be conscious of our moral and ethical responsibility at the moment as well. And I say this because it's important कि अगर हम सिर्फ अपनी legal basis को देख के इस वक्त actions लेना शुरू कर दें, just to reduce our risk instead of overcoming an impossible situation, so the wheels of the economy will, stop moving, and that's not going to benefit anybody. So what I'm going to say, obviously, as a lawyer, we have to give options and scenarios, and we should all prepare for them. But please, don't consider them on a standalone basis. I think that's very important given the current scenario. और उसमें पहली चीज मैं बात करूंगा जो कि आजकल बहुत कॉमन वर्ड यूज हो रहा है टर्म कि जी फोर्स मेजोर सिचुएशन है तो हम फोर्स मेजोर पे रिलाई करते हैं एंड लेट्स टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस और अ कॉन्ट्रैक्ट कि जी फोर्स मेजोर है मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करना या फोर्स मेजोर है मैंने बैंक को पैसे नहीं देने. आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी. ये लेट्स बस्ट दिस मिथ कि जी ये ऑटोमेटिकली कोई फोर्स मेजोर सिचुएशन नहीं है इस वक्त. It depends on the individual circumstances of the company. It depends on the individual contracts that you have. It also depends on which jurisdiction your contract is. Governing law क्या है उस contract? Because हर जगह मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है. पाकिस्तान में फोर्स मेजोर जो है वो एज पर लॉ नहीं है, अनलाइक सम सिविल लॉ कंट्रीज. ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसके अंदर आपने फोर्स मेजोर कैसे डिफाइन किया है और क्या एक एपिडेमिक वाली सिचुएशन उसमें कवर्ड है कि नहीं है. तो उसके बाद हमने ये चीज देखनी है कि पाकिस्तानी कई कोर्ट्स ने ये बात की है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इनकन्वीनियंस और कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो आप उससे यू कैन वॉक अवे फ्रॉम इट unless it's specifically provided in the terms of the contract. I think the important thing to remember here is you have to show impossibility of performance or illegality of performance कि जी आप नहीं कर सकते जिसकी वजह से you can try and walk away from performing an agreed and in place contract. और उसमें कई चीजें और आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी होती हैं कि जी किस वजह से आप वो नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेरिशेबल आइटम्स किसी स्पेसिफिक डे पे कहीं पे किसी को प्रोवाइड करने हैं और सेक्शन 144 लगे होने की वजह से या इवन कर्फ्यू लगे होने की वजह से अगर आप वो कर ही नहीं सकते उसको डिलीवर और उसके बाद वो परफॉर्मेंस के केपेबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो देन दैट्स समथिंग दैट्स मोर लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स मेजोर सिचुएशन. फिर ये कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादातर फोर्स मेजोर के अंदर ये भी बात होगी कि आपको नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होगी दूसरी पार्टी को कि जी वी आर इन अ फोर्स मेजोर सिचुएशन एंड यू आर बीइंग प्लेस्ड ऑन नोटिस और उसके मुताबिक हम आगे स्टेप्स लेंगे. सो वो नोटिस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना अगर वो है रिक्वायरमेंट तो काफी जरूरी है. उसके साथ साथ हमें ये भी देखना जरूरी है कि अगर हम उसको अपनी गलत एक रॉन्ग हम उस पर रिलाई कर देते हैं ऑन अ फोर्स मेजोर क्लॉज और दूसरी पार्टी हमारी उस पोजीशन से एग्री नहीं करती तो कल को उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन और और भी हो सकते हैं कि जी आपने तो ठीक बेसिस ही नहीं ली थी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की और टू वॉक अवे फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स नीड टू बी considered thoroughly and carefully at your end before you do that. पाकिस्तानी लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर लाइक फ्रस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है which one is another thing people rely on or can rely on in certain situations कि जी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है because of specific reasons. Again, impossibility is something that needs to be shown and there needs to be evidence of that. So वो सब factors important हैं. और कुछ सवाल जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिडिल ईस्ट में भी एंड बियॉन्ड, मैं नॉर्थ अमेरिका नहीं नॉर्थ अफ्रीका को भी देखता हूँ, बट उसमें जो कई चीज़ें आई हैं वो ये है कि जी हम क्या अपनी लोन अमाउंट्स जो है वो पेमेंट्स वो देना बंद कर सकते हैं, या अगर एक ग्रुप है उसके 10 डिफरेंट कंपनीज हैं और 10 डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका लेन देन है तो किसी एक में जहां उनको वो पसंद नहीं है या वो करना नहीं चाहते तो वो कर दें. तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू, जो हम खास तौर पे पाकिस्तानी आई फील के वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते ही नहीं है हम सारे ही जब तक कोई मसला नहीं खड़ा हो जाता. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक एट योर कॉन्ट्रैक्ट्स केयरफुली, स्पेशली फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजंस होंगी
एंड उसमें ये है कि अगर आप कहीं एक जगह डिफॉल्ट करते हैं, और क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजंस के भी कई डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं कि उसमें किस एक्सटेंट तक वो कवर करते हैं, बट आप कहीं एक जगह अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो यू मे एंड अप एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू ऑल योर फाइनेंसिंग और वेरियस अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स एज वेल। और उसमें आपके ये है कि दूसरे बैंक्स को राइट मिल सकता है टू कॉल योर लोन entirely and basically can have tremendous consequences for your businesses. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आजकल खासतौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बड़ी आ रही है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने या शायद पंजाब ने भी इशू कर दिया, या इस्लामाबाद आईसीटी ने भी, कि जी ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन, कोई अपने एम्प्लॉयज को फारिग नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं लिए जा सकते। तो उस पर कई डिबेट है। पाकिस्तान में कोई एक सिंगल लेबर लॉ या लेबर कोड नहीं है, मुख्तलिफ लॉज हैं जो डील करते हैं। मेनली वो डील करते हैं एक वर्कर की सिचुएशन को, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स की सिचुएशन है, और उसमें कुछ प्रोटेक्शंस और वो सब कुछ मौजूद है। और कई वकीलों का इस वक्त ये ख्याल है कि वो जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल, वो उस वक्त उनको रिलेट करते हैं। जो ज़्यादातर मैनेजमेंट स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ है, दे डोंट क्वालिफाई एज वर्कर्स टेक्निकली, और वो एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के अंदर है इन अ लीगल सेंस। और उसमें इट इज आर्ग्यूबल कि ये नोटिफिकेशंस अप्लाई नहीं करते, तो काफ़ी फ्रीडम है टू एम्प्लॉयर्स टू टेक एक्शन। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि लीगल पोजिशनिंग असाइड, बट वी डू नीड टू बेयर in mind a larger responsibility we have toward the society at this time. और जो चीज़ हम देख रहे हैं रीजनली इज जो आपके कमर्शियल लीज एग्रीमेंट्स हैं, उसमें रीनेगोशिएशंस काफ़ी हो रही हैं। कई बड़े जो लैंड ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मॉल से लेके कमर्शियल बिल्डिंग्स के, वो डिफर कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली वेव कर रहे हैं, बट कुछ टाइम के लिए डिफर कर रहे हैं। सो आई थिंक अगर ये चीज़ पाकिस्तान में कुछ जगह तो होनी शुरू हुई है, बट शायद ज़्यादा नहीं हुई, इज समथिंग दैट बोथ एज लैंडलॉर्ड्स एंड एज टेनेंट्स वन नीड्स टू कंसिडर कि एज अ सोसाइटी हम इस सारी चीज़ का इम्पैक्ट कैसे कुछ कंट्रोल करें। आई थिंक सिंध गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया कि जी शायद 50,000 से नीचे कोई टेनेंट जो है उसको अपना रेंट देने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये भी कुछ शायद इतने ठीक फैसले अभी नहीं है, नीड टू बी थॉट थ्रू, बिकॉज बहुत सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं टू इंश्योर कि ये लीगली ये चीज़ की जा सके और गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सके इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट। बट हैविंग सेड दैट, दीज आर ऑप्शंस दैट आर बीइंग कंसिडर्ड ग्लोबली नाउ। फिर इंटरनेशनल ट्रेड है, आप में से कई ये बिजनेसेस जो हैं वो उसका इम्पैक्ट है इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स का, ट्रेड का। आप इंटरनेशनल अगर कमोडिटीज लेते हैं, कमोडिटी प्राइसेस इस वक्त फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ऑयल वो बहुत इम्पैक्ट हुई हुई है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? कैन यू, इफ यू हैव ऑलरेडी फॉरवर्ड बुकिंग की हुई है आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की या इवन करेंसीज की, तो आप कैन यू वॉक अवे फ्रॉम दोज कॉन्ट्रैक्ट्स? I think you need to be very careful about potential consequences before you do that. You can take commercial calls on those things. या अगेन वही बात है कि अगर आपने सिर्फ एक ईमेल पे या परचेज ऑर्डर पे एक एग्रीमेंट किया हुआ है तो probably it's a weaker situation. अगर आपने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये चीजें की हुई हैं एंड यू कैन कंसिडर कि उसके अंदर कोई फोर्स मेजोर क्लॉजेज या बाकी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो आप उन पे शायद रिलाई कर सकते हैं to consider the impact. कई businesses ये भी देख रहे हैं कि जी mergers acquisitions की situation के जी it'll be the survival of the fittest की situation businesses में भी, तो उसमें क्या देखें, opportunistic M&A डील जरूर होंगी, बट एक चैलेंज जो हम इस वक्त देख रहे हैं और बिग फोर भी कंपनीज जो हैं, अकाउंटेंसी फर्म्स और दूसरे, कि जी वैल्यूएशन किस बेसिस पे करें। सो अगेन नॉट जस्ट इन द hospitality, travel, and related sectors, but generally, it's F&B sector is really difficult at the moment to see कि future projections किसी business की क्या होंगी, ये impact इसका कितनी देर चलेगा इस सारे scenario का. So I think on those the main issue would be valuations, and as needs to be something we'll all need to consider. फिर ये है कि जी क्या कुछ बिजनेसेस जितनी जल्दी से ये इम्पैक्ट आ रहा है इस वक्त, बिकॉज अगर जिनका रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो गया बिजनेसेस का, उनका शायद इतना कुशन ही ना हो टू सर्वाइव बियॉन्ड अ मंथ और अ फ्यू मंथ्स, एंड दिस इज समथिंग वी आर सीइंग बियॉन्ड पाकिस्तान एज वेल. सो उसमें ऑडिटर्स आपके अब ये कहेंगे, जब उन्होंने आपकी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करनी होंगी, तो क्या कंपनीज आर स्टिल गोइंग कंसर्न्स, या उसमें कोई और एजम्पशन उनको डालनी पड़ेंगी, क्वालिफिकेशंस, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी अपनी रेटिंग्स के ऊपर,
आपकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर, ऑल दोज इश्यूज रिमेन टू बी सीन. फिर कई प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ तक खासतौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जिनमें इन्वॉल्व हैं, वो सॉवरेन गारंटी के इश्यूज हैं. So IPP is being one example, but there are other projects as well, and one needs to consider कि उनमें क्या होगा. I think ये बड़ी डिबेट हो रही है कि गवर्नमेंट भी अब फोर्स मेजोर टाइप चीज़ों पे रिलाई करेगी और रीनेगोशिएट करेगी या कैंसिल कर देगी चीज़ें. I think इतना आसान नहीं है. Everybody should have an open mind. I think if we want to survive in this crisis, we'll need to take steps appropriately. लेकिन again, look at the contracts. इतना आसान ना गवर्नमेंट्स के लिए है ना इंडस्ट्रीज के लिए है to change things, to walk away from guarantees and all that. फिर ये है कि कई प्रोजेक्ट्स के इनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन हासिल है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट बाकी मुल्कों में भी. पाकिस्तान के केस में हमने पहले देखा है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े हमारे एडवर्स अवार्ड्स आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ. सो आई थिंक पाकिस्तान विल बी वेरी केयरफुल इन कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स. हमारी और आई थिंक आई एम श्योर अब अली probably wants to ask some questions. I would just say that we also need to make sure that we obey the law. इस वक्त हमें हुकूमत, इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे लिए बहुत सारे इकदाम ले रही हैं, and I think we need to respect that. I think we have newfound respect for our law enforcement agencies as well during this crisis, along with, of course, the doctors and nurses and all essential service workers. So we do need to, इस वक्त कोई बहादुरी नहीं है, लॉ तोड़ना बेवकूफ़ी है. So I think मैं वो यही कहूँगा कि हम सबको उसका ख्याल करने की ज़रूरत है. Over to you, Ali. I'm happy to answer any questions. Oh, thank you so much. That was so comprehensive and so detailed, as expected from you. The format for question is that you can use the chat channel. जो Zoom का chat channel आप उसमें question पूछ सकते हैं. हमारे पास 50 लोग हैं participants हैं. So just put your questions over there and I'll ask them. I'll kick off with the questions. Taimur would love, you also cover the region. Would love to get an assessment from you. How's the economic situation right now in the Middle East, and how do you think that will impact Pakistan, because Pakistan's economy in general has been pretty reliant on the flows from the Middle East. So how do you think things are over there? I think इसमें दो एलिमेंट्स हैं. एक तो कि जो मिडिल ईस्टर्न सपोर्ट हमें मिलती है और इन्वेस्टमेंट आती है. दूसरा ये कि जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से जो रेमिटेंसेस आती हैं, दैट्स द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इनटू पाकिस्तान ऑब्वियसली. सो पहली चीज़ के ऊपर तो ये है कि इनका अपना ऑयल रेवेन्यू हिट है सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का. एनुअल बजट्स जो हैं वो अगर $50 or $60 अ बैरल के ऊपर बने हुए और अभी 20s में चल रहा है, तो दैट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू बी एज जेनरस with countries like Pakistan as they have been in the past. So एक तो वो चैलेंज आएगा. फिर जो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान बाहर इस रीजन से पाकिस्तान में आने का की बात चल रही थी, आई थिंक दोज वुड बी अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि वो पहले अपने मुल्कों में स्टिमुलस पैकेजेस जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे. जहाँ तक फॉरेन रेमिटेंस की बात है, अनफॉर्चुनेटली वी आर लाइकली टू सी अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स ऑफ वर्कर्स इन द मिडल ईस्ट. बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहनें जो हैं वो वापस जाएंगे पाकिस्तान. सो आई थिंक इनिशियली तो अगर वो वापस जा रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा हो सकता है कि इंक्रीज हो फॉरेन रेमिटेंस में, पाकिस्तान के लोग अपने पैसे पाकिस्तान वापस भेज दें. बट अगर सिचुएशन ये ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करती तो फिर month on month we are likely to see a decrease in our remittances from overseas Pakistani, and that of course will have some impact. No, thank you for that. Now I know आपने मुझे बोला था कि आप when you're covering your legal, you're wearing the legal hat, you don't like to talk about your personal passions such as cricket and your involvement in PSL. But I thought the question is interesting, and I think a lot of people in Pakistan would be interested in knowing that what do you think will happen in PSL now? I think that's a question that I would like an answer to as well. I think इसमें clarity नहीं है. I think the decisions that were taken at that moment
to stop PSL from going forward were proper. सारे stakeholders की तरफ से थे वो. आगे क्या होता है, I think we need to see. इस वक्त दुनिया में जहाँ पे बहुत कई महीनों बाद होने वाले ओलंपिक्स और विंबलडन कैंसिल हो रहे हैं, so I don't think anybody is in a position to take a call on the future of PSL for this season. Inshallah, agle season and beyond, things should be back to normal. But that really depends on how not just Pakistan but the world tackles with this crisis. No, absolutely. मैंने सिर्फ वो question ask किया था just to make it slightly more casual, because given the fact that these are very grim times. You mentioned that Pakistan में laws में इतनी clarity नहीं है. How bad is the situation? Now, I'm sure you have seen other crises as well, 2008. How would you rank this situation from the position you are looking at the industry? I think एक तो हर crisis also is an opportunity. बहुत नई चीजें आती हैं, हम इस crisis में देख रहे हैं. शायद 2008 में हम work from home वाली situation ना कर सकते, या इतनी जल्दी businesses adapt ना कर सकते to the new normal. I first moved to the Middle East in 2008 in the middle of the crisis, and all my growth took place during that time. So as a professional, but I'm saying, so I don't think we should generalize things. हम यही देखेंगे कि digital economy, health tech, ed tech और बहुत सारी और चीजों के अंदर बहुत potential भी है. We'll adapt to new things, cost saving, rationalization होंगी. But I think we'll need to be prepared as a country, as individual businessmen, as advisors, to tackle this situation in a better way. और कई चीजों में हम बहुत आगे propel हो जाएंगे. अब स्टेट बैंक ने अगर कुछ पॉलिसी लेके आनी है, या SECP ने, या बाकी रेगुलेटर्स ने, जो शायद सालों लगते, वो अब महीनों में, शायद हफ्तों में चीजें होंगी. So there are opportunities. No, thank you for that, and I do hope that the government can use this time to cut through the red tape which has been holding it back for a long time. We have a great question from Harun. Harun, firstly, thank you for the comment earlier. And so his question is, can force majeure be invoked by a buyer in a contract where an explicit clause of force majeure is not present specifically for the buyer? So उसमें again दो चीजें जरूरी हैं. एक तो ये कि क्या वो पाकिस्तानी लॉ के अंदर है contract. पाकिस्तानी law force majeure as such तो नहीं कहता, so you'll need to look at the frustration concept under the Contract Act. और फिर जो बातें मैंने पहले की, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. अगर किसी और jurisdiction का law है, तो फिर आपको उस jurisdiction का law को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे how is force majeure or frustration treated. So I think that I should emphasize here कि हम बहुत lightly लेते हैं legal support को पाकिस्तान में, even as businesses, not just as individuals. I think it's time to rethink that, and we need to be prepared for such situation in the future. Proper contracts बहुत जरूरी है. एक इस पे मैं और बात कर दूं, हमें एक liability का issue भी, जो कि कुछ लोगों ने मुझसे पहले पूछा है, कि businesses जो हैं, ज़्यादातर family businesses और कुछ और जो medium sized businesses तक, वो sole trading company या अपने NTN के अंदर सिर्फ वो इंदराज करा के एक organization का या अपने कंपनी का वो बिजनेस कर रहे होते हैं. सो प्रॉपर प्राइवेटली लिमिटेड कंपनीज वगैरह नहीं बनाएंगे. सो इन सिचुएशंस लाइक दिस, जब आपको बहुत सारी चीजें, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर पा रहे हो, और खासतौर पे अगर आप क्लेम नहीं कर सकते कि फोर्स मेजोर है या टर्मिनेशन प्रॉपर हो सकती है, तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ पर्सनली टू ऑल दीज लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज एंड इंडिविजुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टीज, बिकॉज आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाई हुई जहां आपने अपने लायबिलिटी को लिमिट किया हुआ. So I think this will also throw up a lot of other issues and questions over the next few months and years. So another question from your city, from Khwaja. How and where do you feel we legally stand on the Qatar LNG import contract? Do you qualify for force majeure? मैं स्पेसिफिकली उसकी बात नहीं करूंगा, बट लेकिन जनरली मैं फिर यही कहूंगा कि जी, जो भी कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, कि इंडिविजुअल्स ने किए हुए हैं या कंपनीज ने किए हुए हैं, उसमें आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स देखनी पड़ेगी. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी सिचुएशन ऐसी है तो मैंने फोर्स मेजोर क्लेम कर लेना है कि जी ये तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता. इट हैज टू बी
the performance of the contract at your end has to be impossible, not inconvenient. So अगर पाकिस्तान ने कोई चीज़ बाहर से लेनी है और पाकिस्तान कहे नहीं जी हम तो अपनी क्योंकि हमें नुकसान बड़ा होगा, ये रेट गिर गए, हमें नहीं चाहिए, तो फिर तो नहीं है. लेकिन अगर ये सिचुएशन हो कि जी it's impossible to take the capacity or take storage capacity नहीं है आपके पास, या कोई और circumstances हैं, या port services ही नहीं operate कर रही, तो those are things where a case can be built. Another question which is slightly more fundamental, and I think you alluded on it initially when you were speaking, that can you elaborate on the differences between the concept of force majeure in civil law and I think common law, the British system and the American system? Correct. Or what we see in France or the certain Middle Eastern countries वगैरह जो civil law के structures जहाँ पे भी हैं, तो देखें उधर law के अंदर दिया हुआ है कि force majeure क्या होता है. So अगर आपका contract नहीं है या आपके contract में force majeure की कोई बात नहीं है, so you can fall back on the legal provisions given the statutory provision कि जी ये situation इस वक्त force majeure situation है. आप कोई भी contract करें, अपने उस contract में आपने सारा law तो नहीं लिख सकते ना, बट इसीलिए लिखते हैं कि गवर्निंग लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट का इंग्लिश होगा या पाकिस्तानी होगा या यूएई का होगा. मकसद ये होता है जो चीजें कवर्ड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, उन चीजों के लिए आप उस लॉ को देखेंगे कि लॉ क्या कहता है. सो जो सिविल लॉ कंट्रीज के लॉज हैं वहां पे फोर्स मेजोर एज अ प्रोविजन मौजूद है, कॉमन लॉ कंट्रीज में ज्यादातर नहीं मौजूद है, राइट. लेकिन हमारे केसेस में हमारे कोर्ट्स ने मोर रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू इयर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में डिफाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि जी फोर्स मेजोर क्या है. सो हम उनको देखेंगे. इसी तरह इंग्लिश कोर्ट्स की पोजीशन है, बट दैट्स एन इवॉल्विंग पोजीशन. सो लेकिन ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हों जहां आपका लॉ कोडिफाई नहीं करता किसी पोजीशन को. तो आपका पॉइंट ये है कि अगर हम इंग्लिश लॉ फॉलो कर रहे हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर का क्लॉज नहीं है, तो उस सिचुएशन में इट्स नॉट दैट क्लियर. It will really depend on वो judgments हैं जरूर जिनमें कुछ चीजों को highlight किया गया, describe किया गया, define किया गया, but आपको ये ensure करना पड़ेगा और show करना पड़ेगा कि क्यों आप ये contract perform नहीं कर सकते. It'll have to be close to impossibility or impossibility itself in relation to the performance of the contract. खाली inconvenience क्या या आपकी profitability hit हुई है is not going to be sufficient. It's not going to be an excuse. और आपको शो करना होगा कि अगर आपके लोकल सिनेरियो के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में क्या वजह है जिसकी वजह से आप कर नहीं सकते डिलीवर. मतलब अगर कर्फ्यू है या कंप्लीट लॉकडाउन है, ना आपके वर्कर जा सकते हैं, ना आपकी सप्लाईज आ सकती हैं, ना जा सकती हैं. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन बिल्ड एज ग्राउंड्स. बट अगर कुछ लोगों ने अपनी पाकिस्तान में जिस तरह अपनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स करने के लिए फैक्ट्रियां मिले खुलवा ली हैं, राइट, इंक्लूडिंग मेरे शहर मुल्तान और मेरे दूसरे शहर लाहौर में, तो ये केयरफुल होना होगा बिकॉज आपको अब वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अब आपको रिलैक्सेशन है कि जी आप अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं, आपके वर्कर्स भी जा सकते हैं वहां पे. सो व्हेन यू अवेल दीज relaxations you also have to be aware of and conscious of the consequences it may have on the legal position you are going to take tomorrow. So I think that's something that needs to be considered. No, absolutely. That's a very good point. And I think another great point जो आपने पहले raise किया, I would just try to repeat that just because I think it's very relevant, that a lot of companies here in UK at least, they are saying कि उनकी जो quarterly report है उसमें auditors sign off ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो auditors कह रहे हैं कि इतनी uncertainty है over the numbers, inventory position, as you said, revenue position, are you a going concern or not, that they are taking a long time and they have raised the bar on the data they need to sign off on the statement, which is why a lot of the companies will have issues in publishing their first quarter and second quarter statement, which of course will have implications on the financial markets. Also, it might also create uncertainty about previous revenues which have been booked, because if you've sold something, booked that as revenue, but you have not received the cash for it, so there might be write-offs and inventory write-offs as well. Taimur, again, you have discussed this earlier, Magar would love to have your comments again, which is the situation with IPPs.
and the sovereign guarantees on it and the contracts, because there is a lot of fear in the financial market that the government will use this situation as the excuse to put pressure on the IPPs and either renege on the contracts or try to renegotiate them. If you were advising the government, if they asked you your advice that, what should they do, what would be your suggestion? अच्छा, एक तो मैं ये कहूँगा कि contrary to public perception, I am not doing any work for the government on any legal issues. I actually mostly represent commercial parties and international clients. That is my client base. मैं again general terms में बात करूँगा ताकि कोई conflict वाला interest वाली बात ना हो. I would just say कि देखिए, ये एक चीज तो है, अगर इस वक्त हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान में 20-25 हज़ार मेगावाट है और इस वक्त हमारा यूज जो हो रहा है वो 5-6 हज़ार हो रहा है, एक गरीब मुल्क है तो हम प्रेशर में तो हैं, ठीक है, और वो सब कुछ भी आएगा, रेवेन्यूज अगर यूटिलिटीज यूज नहीं हो रही तो बिल नहीं आएंगे, हुकूमत का सर्कुलर डेट वाली सिचुएशन जो है वो ज्यादा खराब होगी. तो ये सब कंसिडरेशंस तो आएंगी, बट हुकूमत को भी जो मैंने सारी बातें की हैं in a commercial context, contract context, सरकार भी एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट, उनको भी वही चीज देखनी होगी कि is it impossible for them to deliver contracts, is it illegal for them to deliver to perform contracts, तो तभी कोई एक्शन लिए जा सकेंगे in relation to IPP. फिर ये डिपेंड करेगा कि किस IPP के साथ एग्रीमेंट में क्या चीज लिखी हुई है. So I think this is an opportunity to renegotiate or discuss things in an open manner between all parties. But मैं फिर यही कहूँगा कि I think इतना simple नहीं है कि कोई इसको general एक force majeure situation पे rely करके कहे कि जी कल से आपको हमने पैसे नहीं देने. Again, हम बहुत पाकिस्तान में भी एक बड़ी जनरल बात करते हैं, हम पैसा बनाना बुरा समझा जाता है पाकिस्तान में. I think ये भी एक गलत अप्रोच है. I think we need to understand, जिसने इंडस्ट्री लगाई है उसने भी लोन दिए हैं, एम्प्लॉइज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सप्लायर्स हैं. इट्स अ साइकिल, द साइकिल नीड्स टू गो ऑन. सो उसमें फंडामेंटल चीज फिर यही होगी, आई मे बी डाइग्रेसिंग, कि हम या तो डिसाइड कर लेंगे जी हम एक सोशलिस्ट रियासत हैं, वेलफेयर स्टेट हैं और सब कुछ सरकार ने करना है, या फिर हम एक ओपन मार्केट, राइट. सो ये दरमियान वाला रास्ता जो है ना वो नहीं चल सकता. So I think we need to be conscious of that, and I am confident that the government will not take any steps that will actually result in more adverse legal and financial consequences later on. No, that's a very reassuring advice. We got two more questions. I think we have time for two more questions. I'll just read them. I'm combining a couple of questions together. So, question from Badr Alam that there are a high number of sole proprietary companies in Pakistan, which are mostly SMEs. What should they do given the fact that they are not running like a corporate entity? And also, there was an earlier question that what will be your advice to SECP? What can they do to support the private sector, the private limited companies rather than just the public? मैं पहले SECP वाली बात करता हूँ. I think एक तो वो कर रहे हैं कई चीजें, but they can facilitate conversion of these sole proprietorships into single member private companies, promptly, quickly and all that. और कुछ और relaxations दे सकते हैं चीजों के अंदर, सारा सिस्टम और ज्यादा ऑनलाइन कर सकते हैं. बट जो पहला सवाल है उस पर मैं यही कहूँगा, अगेन जो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है आप उस पर एक्सपोज हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है. देयर इज अ रीजन व्हाई समथिंग इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी. ये बाहर उसको कई जगह पे लिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है, पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, बिकॉज यू आर लिमिटिंग योर लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ योर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो फिर आप और आपके पर्सनल एसेट्स आर ऑल एक्सपोज्ड, राइट. सो ये आपने अगर रिस्क लिया हुआ है तो लिया हुआ है. एंड दिस इज व्हाई आई हाइलाइटेड इट अर्लियर कि अभी भी अगर आप उसको स्टेप्स ले सकते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तो लेने चाहिए. एसएमई और नो एसएमई, ये मैंने बड़े साइजेबल बिजनेसेस देखे हैं पाकिस्तान में जो है सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहे हैं. तो आई थिंक ये सबको ये लेना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे. और ये फैमिली मेंबर्स में भी है कि यानी कि बिजनेस 4 भाइयों का होगा लेकिन वो एक के नाम ही चल रहा है, वो फंसेगा बाद में, वो एक ही फंसेगा लीगली.
So I think we need to go beyond that. We need to do so many other things. We need to do our family businesses rather Pakistan mein apni corporate governance, family governance structures लाने चाहिए, family constitutions होने चाहिए. मतलब ये बातें कई बड़ी basic हैं. हम international context में देखते हैं. Middle Eastern family groups have become billion-dollar, multi-billion-dollar enterprises. They have done some of those things. हम पाकिस्तानी businesses अभी उस level पे ही नहीं पहुंच रहे, with some exceptions. तो ये सब कुछ करना पड़ेगा. I think we should view this crisis as an opportunity to put our house in order. So और पाकिस्तान में कोई advisors की कमी नहीं है, from financial to accountancy to legal. We have some of the best brains. वही brains बाहर भी सबको advise कर रहे हो. अगर बाहर हो तो कर रहे होते हैं. I am a unique position कि मैं I'm at the cusp of this between Pakistan and Middle East in particular. But I think we have the human resource and the expertise available. I think we need to utilize it. Absolutely, absolutely. And as you said earlier, that this is a good time to drive change, just because some changes have been forced upon us. We have a question from Harun, and I'll add on that. He's asking that, do you think that there'll be a rise in the pace of privatization? You talk to investors in the Middle East as well, and in the US as well. I think some venture capital firms ask your opinion on the region and Pakistan in particular. Do you feel that people are interested in investments in these times? As in, are they trying to chase low valuations, or are they holding back at this moment? What's the sense which you get from I think जो opportunistic strategic investments जो हैं वो तो चलेंगी. Cash is king. So उन companies के पास या sovereign wealth funds और entities के पास जिनके पास cash है और वो अपना strategic footprint जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, वो definitely इसको देखेंगे और इन options को explore करेंगे. But I think from a purely commercial point of view अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे I think there will be a slowdown. Because वही बात है कि valuation आप कैसे करेंगे किसी business की इस वक्त. And I'm saying even apart from the most adversely impacted businesses, बाकियों में भी ये concern आएगा. आपने खुद भी अभी ये मज़ीद बात की on the issue of the financial statements. उसमें बहुत सारे issues आएंगे अभी आगे चल के, so it'll be a challenge. लेकिन हाँ, अगर यही बात है कि अगर किसी ने अपना business पूरा बंद कर देना है, वो पहले $10 million का था और अब वो बंद होके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो किसी को $2 million में बेचने को तैयार हो तो हो सकता है जरूर कोई ले लेगा. And that may be a way of at least saving the workforce, continuing with the business and and all that. So I think it'll be case by case, scenario, and one will have to see. Some business will go on for sure. So that's very interesting, because essentially, as you said, it's about survival right now, and even the buyers who are sitting on cash must be conscious of that and looking at that kind of scenarios rather than be willing to pay out high valuations, which I suppose is a concern for the early stage tech sector, of course not just in Pakistan but globally, where valuations were very high and where we have seen companies like WeWork, lose 80 billion of value which they had created to almost gone down to zero, and big investors and aggressive investors such as SoftBank, which were driving some of these valuations, suffer very heavily because of that. I know that you have been pro bono active in advising a lot of startups as well. Any advice to them? Do you think they'll be able to raise money? Any comments on that? I think मैं पहली चीज तो सबको ये कहूँगा कि स्टार्टअप्स हों या कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो कि अब लीन स्टार्टअप को दोबारा पढ़ेंगे आप और लीन स्टार्टअप मॉडल को फॉलो भी करें. आई थिंक यू नीड टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल. अब एक राइड हेलिंग ऐप है, उनके देखें अगर 5 लाख उनके लोग थे जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, और ऑन एवरेज अगर $500 भी उनकी महीने की उस पे उधर से इनकम थी, और वो अगर इस महीने नहीं आ रही है तो दैट्स $250 million hit in 1 month. Maybe not for the company, but for individual people associated with the company. So the bigger you grow, the bigger the issue becomes of survival, right? And resilience. So obviously, I think the investments will continue in the startup sector. कुछ sectors में ज़्यादा होंगी दूसरों के मुकाबले में, but being lean is key.
And I think having a realistic focus on future projections, growth, milestones will be more important than ever. An idea alone is not enough, right? The execution of the idea and generating revenues is critically important, and it's going to be more important moving forward. So differentiation would be the key at this time. The last question, and then we'll wrap up. Any comments on the construction package, which I don't know if you've seen that, which the government has announced? Do you think that people will be taking benefit of that package and investing in this current environment? I think करना चाहिए लोगों को, किसी भी इंडस्ट्री को स्टिमुलस देना से, और इस तरह की लार्ज इंडस्ट्री पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे लोग या पढ़ाई पे या शादियों पे या घरों पे पैसे लगाते हैं, I think it is a relevant sector. I think the other issue would be कि अगर पहले लोगों की बुकिंग हुई है प्लॉट्स की या घरों की या अपार्टमेंट्स की जहाँ डाउन पेमेंट्स हुई हैं, and at all levels अगर लोगों के पास पैसे नहीं है to continue with their payment plans, I think there will be a challenge. So अभी जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात है ना, again I'm not just talking about Pakistan, but I think we have started seeing this regionally कि ये तो अभी बहुत issues आएंगे उस सेक्टर को भी आगे चलाने के लिए. आपने 2008-9 के बाद अगर देखा कि अनफिनिश्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मिडिल ईस्ट में रह गई और वो कहीं आज तक नहीं बनी या चली, तो ये इश्यूज हमें पाकिस्तान में भी आएंगे. और अभी तो हम उस तरफ मूव कर रहे थे जहां हम इस तरह के ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज ऑफर करना शुरू करें, एंड ऑल. तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी मोर चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. सो सपोर्ट करना तो बड़ा जरूरी है, बट आई थिंक उसके लिए भी रेगुलेशन और लॉज आने पड़ेंगे कि जो इंडिविजुअल बायर्स इसमें स्टक हैं और उनकी वजह से डेवलपर स्टक हैं विद देयर सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, वो इस सिचुएशन में से कैसे निकलेंगे. बिकॉज अगर वो नहीं निकल सकेंगे तो ये तो शुरू ही नहीं होगी चीज, राइट? So apart from the very big and maybe the very small players in the market. So there are a lot of legal issues to consider and financial issues to consider on this. So a lot of issues to consider across the board. Thank you for taking your time for this call. This was very insightful. If I had to summarize jo aapne bola, the key takeaways for me at least is that you said the situation is pretty complex. Magar logo ko the details of the contracts are really relevant right now. Or in cases pe contracts clear nahi the, us situations mein things will be even more complex. So your advice is that going forward, companies should use proper structures, both from a corporate governance perspective and proper contracts when they are getting into these deals. But even right now, it's really important for people to understand their legal obligations from the complete sense, and not just get enamored by terms such as force majeure. And don't rely that these are easy options, because there's a 360 degrees impact of whatever decision which people are taking, whether that's firing of people and changing the contracts. And the most important thing which you said is that there's a moral and human obligation which we all have, that moral obligation is not just without any value, but there's a value of that as well, because if we don't adhere to that, then we all collectively lose out. Thank you, Taimur, for your time, and have a lovely weekend. Perhaps your weekend was already started today. Friday there is no weekend these days. I think in some respects it's good to be busy. But thank you very much. Very well summarized, Ali. And I think thank you for everybody who joined the call as well, and for some very good questions. So it's been informative and useful, I think, for me as well. Thank you as always, and I will share the recording with you and with everybody on the call. Thank you. Thank you. Appreciate it. Bye-bye.